Yes, Afia, over to you. Thank you. Uh, Kalpesh Bhai Gupta ji, ने would you like आपने यहाँ anything? पे इंट्रोडक्शन का आपसे तुमने Okay. या Uh, Sir, should we start? यस ओवर टू यू. Uh, Good evening to all. I, Dr. Afia Bano from Sri Ram Swaroop Memorial University, Barabanki, welcome you all to the first day of 11-day online FDP on entrepreneurship. Today, we have our speaker, Dr. Bhavin Pandya, sir. Sir, we welcome you all. He is the Dean Faculty of Management, Kadi Sarva Vishwavidyalaya, and CEO of SV Innovation Foundation at SV Innovation Foundation. Sir had a brilliant academic career, making to the list of university toppers in MBA program. He worked as a frontline manager for a year in FMCG for marketing. Currently, he is professor in MBA program at SVIM. He was instrumental in collaborating with the University of Alberta, Canada, on behalf of GTU Ahmedabad. He has authored the book Advanced Marketing Management, and his efforts led to the setup of Kotler Incubation Center in India at GTU Ahmedabad with Dr. Philip Kotler. Today, sir will be speaking on Introduction to Entrepreneurship and Startup Ecosystem. Sir, we welcome you all, and sir, we welcome you all, and we are waiting eagerly to hear you, sir. Thank you, Afia, for your kind and precise introduction. Thank you, Dr. Kalpesh Gupta from Gujarat National Law University for giving an opportunity to speak to really a brilliant bouquet of academicians across India. I wish this 10-day entrepreneurship faculty development program a great success. Thanks to all the faculties who have joined today. And today we are going to discuss on entrepreneurship and startup ecosystem. Let me honestly tell you, I also wrote policies for Government of Gujarat in Industry and Mines Department. We run the policy from 2015, 16, 2020. Then 2020 to 25 also I served as task force member, Government of Gujarat for Industry Commissionerate. So I'll also discuss all those parts and policies in a very short while. But before that, probably if we talk about entrepreneurship and startup ecosystem, see, everyone is talking about startup ecosystem after Honorable Prime Minister in 2014 started that initiative across India. And I can show you before that in Gujarat in 2011-12, we started a very first incubation center at Gujarat Technological University, which was first of its kind and one of the largest in terms of number of colleges affiliated to that. Because at that point of time, we have almost 495 colleges which were running under the auspice of Gujarat Technological University, and we have started first incubation with the world's number one marketing guru, Dr. Philip Kotler, who is believed as marketing man of the world. Almost many of the Fortune 500 companies, they are taking support and consultancy from Dr. Philip Kotler. He's teaching in Northwestern University, USA, Kellogg School of Management, very prominent over there. So startup and entrepreneurships, normally people keep a very thin margin between these two terminology. But let me honestly tell to all of you that entrepreneurship is probably a process, and it is also a scientific process. I firmly believe nothing can happen by serendipity or luck or chance factor. No doubt we used to tell that destiny is there, serendipity is there, chance is there. Whatever efforts you put in your life, but the serendipity play a vital role. But beyond that, let me tell you, entrepreneurships are the ventures which you built in a very traditional way, where uh, I'll explain when I'll explain the two basic characteristics of startup, then you'll understand. See, startup is a different ball game, and India is probably in the last league of the countries who joined the bandwagon of startup ecosystems. Earlier, if you'll see, there are various countries, right, from Israel to US to Sweden, many countries. If you'll see in innovation index of the world,
Global Innovation Index, and probably consistently we could manage, India as a country could manage 40th place in last 3 years and 39th place last year. So I also speak many a times when people ask about innovation index and exactly what is the importance of the same scientific research and innovation. I'll show you an entire presentation. I'll not take much time for it, but yes, it is required. What happened in last 30 years? Unless and until if we know what happened in past, and unless and until we predict what will happen in next 30 years, then probably things are half cooked. So I'll also share my screen and show you what happened in last 30 years and the big innovations which has changed the world. But prior to that, let me also share with you how we have started that incubation on Ayurvedic medicine at Gujarat Technological University. When I was in touch with Dr. Kotler, at that point of time, Millennium Development Goal were there. Later on, in 2012, meeting happened at Silicon Valley, and the entire world was discussing about Millennium Development Goal, what we should do. Later on, turn into the Sustainable Development Goal, which are today known as SDG. So we were talking about that, and if you'll see all these 14 goals, then 8 of them they're talking about food, nutrition, and health. So we thought that what is happening nowadays, if you'll see across your cities and destinations, then small kids are facing problem from the cancer. If you'll see, there are a lot of cases of infertility. There are various cases where at very young age, boys and girls are getting the gray hairs, a lot of adulteration in food, uses of pesticides. And if you'll see, as world is advancing, the problems are also advancing. They are not reducing. And how can we create a better society? So Dr. Kotler, when I talked to him, he asked me a simple question. Dr. Pandya, do you know what is the market of Chinese traditional medicine in USA? And I was clueless. I said, I don't know. He said $60 billion. I'm talking 2011-12. Before we started incubation center at Gujarat, later on in 2014 at India level, people have started talking about incubation center. So he said Chinese traditional medicine, which is using animal and plant extract both. In Indian Ayurveda, we have 5,000-year-old science and mentioned in Rigveda, Yajurveda, Karka Samhita, Charak Samhita, and Shushu Samhita. They are all mentioning the importance of the herbs and medicines. So we are using only plant extract in Ayurveda. So I was clueless and I searched and I get back to him. I said, I went through the data and 1.5 million billion dollar is the market of Indian Ayurveda in the USA. So we were almost 50 times less than what China was doing in USA. So he said, why don't you develop and rejuvenate your own Ayurvedic medicines? So how the idea of startup comes and how the big industry rejuvenate. This is a classic case of that. And we started an incubation center on Ayurveda at Technological University, which is talking much about engineering. Today, I can say that what could be the area today if I talk about today's area for exploration. Then we talk about artificial intelligence, machine learning, big data analytics, cloud computing, blockchain, and so on. Semiconductor, I did almost 3 episodes on television on semiconductor. I talked a lot on RISC-V, Reduced Information Side Computing. RISC-V is basically software on which you can design the chip or wafer, whatever you say. So earlier the competition was about all very large integrated circuit. Now it is narrowed down to microchip. And microchip, the competition across the world is happening. Earlier 10 mm was the size we wanted to design. Now it has internationally come down to 5 mm, and China and other Korea and Taiwan, they are thinking about 3 mm. Can you think that size of microchip? Because it is altogether different ball game. So world has changed over a period of time. If you'll see the civilization, the way it is developing, then we need to understand what has happened in last 30 years and how startup is different than entrepreneurships. So entrepreneurship is basically venture, and then it turned into intrapreneurship, which is a more scientific process. So entrepreneurship, entrepreneur, people pronounce it in a different manner. It's a very systematic process where a person create greenfield opportunities for the society, where he deploy the resources and engage the manpower for profit making activity. So it may be sometime non-profit, maybe activity also, but basically these are the basic premises of entrepreneurship. Startup carry 2 important characteristics. Number one, how we define the startup. Then startup should have
disruptive technology. Now note this word, it is very important. A number of times we confuse between entrepreneurship and startup, and many committees I have attended and seen, and I evaluated the proposals, and they do not know this is not a startup. This is an entrepreneurship activity which you are coming out with. So very first, startup should have disruptive technology. The technology should be totally new, which nobody in the world or nobody in your particular country has started following it. Number one, technology should be new, technology should be disruptive. Number two, there should be an exponential growth of that business. Now, how should I define exponential growth? You all have learned mathematics in your school days. We basically have two ways to calculate means arithmetic mean and geometric mean. So in arithmetic way, the things are progressing, but they are having a subtle probably distance. The way we calculate interval and ratio kind of thing, or systematic sampling, the way we are choosing. So if you are having 5 customers today, after 1 month they'll become 50. After 1 year it will become 500. Next year 1000 or 1200. After 3 years probably you will find 5000 customers. After 4, 10,000. After 5 years 15,000 customers. This is arithmetic way of growing the business. But in startup, we assume that the business will grow geometrically. So today, if you have 500 customers, at the end of the month, they should be 5,000. At the end of the year, they should be 5 lakh. At the end of the 5th year, it should be more than 10 crore. So this fall under the definition of startup. So check your business proposal, whether it has these two basic characteristics to define a startup. First, technology disruption. Second, possibility of exponential growth, or your business is growing with geometric mean or not. So this is how we can see. So let me share the screen and explain you what has happened in last 30 years in terms of innovation, because we are learning entrepreneurships and startup ecosystem. I'll also speak in concluding part about the policies and other things which you'll hastily learn, but we all should know this. Kalpesh, is my screen visible? Yes, yes, visible. Yes. Innovation. What happened in last 30 years? An internet broadband, WWW. We all forgot Tim Berners-Lee, who founded WWW. Today, I asked a computer engineering professor also. We are unable to say who invented WWW. Everybody forgot Tim Berners-Lee, who made the revolution, who created a web of technologies. PC, laptop and computers, mobile phone, email, DNA testing and sequencing, and human genome mapping. I used to teach that 10 years back also, the same presentation. And at that point of time, COVID was not there. So nobody was understanding the importance of genome sequence. Today, it is applied to everyone. Today, we want to decipher or interpret genome sequence, because unless and until you understand the genome sequence, you won't be able to identify the gene which is responsible for causing cancer, the gene which is responsible for causing infertility, the gene which is responsible for causing lungs or pancreas cancer, gene which is responsible for growth, gene which is responsible for carrying out your hereditary characteristics or diabetes or blood pressure, hypertension, other things. So today, scientists are busy in understanding the genome sequence of not only humans, but also animals and plants. And because of that, today we have very innovative crops which are coming out, and scientists are working in biotechnology on various genome sequence of the plants. So, in time to come, probably we have on a one mango tree, we have 14 different kind of mangoes or 20 different kind of mango. On the same, probably in China, you may be finding this. On the same cotton ball plant, you will find the cotton which has different colors: blue, red, yellow, green, white. So cotton balls are there. So how we are doing this? You are changing the genetic structure of that particular seed, and then probably you can find the growth. Same thing we can do with the various plants. Those who are well aware about the history, maybe knowing the wheat story. Original wheat, they were growing on a plant which were having an absolute long height like a bamboo tree, and they were very small grains which they used to identify as a wheat. Very small grains or very height. It was very difficult to pluck the particular wheats.
Then this British and US colony, they thought that let us change the genetics and give it to the India and China. So they changed the genetics. So now plants are small and wheat is powerful. And if you will see the that particular seed also, it is very longer and thick. So change the genetic structure. So it is not wise to consume the wheat nowadays. A lot of dietitians and doctors, they are telling that glycemic index of wheat is very high. So if you consume wheat, it is very difficult to digest wheat also. If you see this perspective, along with the startup and innovation, I should also talk a few of the things about your food habits and other things. It will help you a lot in time to come, because at the end of the day, health is wealth. We all know. So this DNA testing has changed the world, and now people are talking about longevity. So how to live longer? If you'll see Larry Ellison to Elon Musk, they all are planning to live for more than 150 or 200 years. So that you can do with change in DNA sequence or trying something with the genome sequence of the humans. So this may bring the changes. MRI, magnetic resonance imaging was a big revolution, where today we see the MRI of your spinal cord to brain, everything, every organ. Probably we are processing microprocessors. They are the boons. As I said you earlier, Intel was having two processors called 2A. Intel become later on it became the brand. Earlier they were it was Intel was identified as a name and model number of processor. Those who lived like I entered in academics 25 years back, but those who again started 35 or 40 years back, they know 286, 8086. They were the model through which Intel was. And then the name Intel processor come. Then then Celeron come. Then Intel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then I find all the story i7 and all. They were later stories. So microprocessors change the world, because big, huge, giant computers come into the fingertips, or they become the small processors. Credit go to microprocessors. They reduce the size of computer like anything. They reduce the size of various things. Fiber optics. I used to tell to many of our ministers in Gujarat almost 15 or 20 years back that we should have fiber optics policy, like 5-year plan. We should have fiber optics plan also, that how many fiber optics lines you can spread in the country. More you will spread fiber optics line, more the GDP of country will grow. It is directly aligned with fiber optics line. The more internet efficiency, the more processing of the data, the more business process outsourcing will take place if you have more fiber optics. So fiber optics change the world like anything last few years. Office softwares, yes, spreadsheet, word processor, and today we all know artificial intelligence is added in that. And in artificial intelligence also, there is applied artificial intelligence, which is now working on all the spreadsheet, PowerPoint, other things, ChatGPT and Perplexity and many other. Google has come out with multiple things. Microsoft has come out with multiple options. ChatGPT, OpenAI came out with various products. So now this all made the life of human more simpler. Non-invasive laser robotic surgery, yes, laparoscopy and all, they become very popular today. In knee also, the doctors are marketing that we are doing robotic surgeries in heart. If you want to implant the stent, to other things, we have robotic surgeries, and robotic surgeries are now creating wonder. In Gujarat, we have Dr. Tejas Patel, Padma Shri Dr. Tejas Patel. He performed very first heart surgery while sitting almost 22 kilometers away from the actual patient side, and he did it. So robotic surgeries, yes, they'll become the next boon. Open source softwares and services, we all know Linux and Wikipedia, they have created the wonder. All who are associated with technology must be knowing all these things. Light emitting diodes, LED, we know LED everywhere. People are talking about LED. If you want to display this, we need LED. Everyone is talking about LED, but that light emitting diodes, they have created the wonders. Now we can see the pixels in a very nicely arranged manner. The picture clarity is more. A liquid crystal display LCD is also equally important. We use a lot LCD projections and LCD projectors. Global pocket system, GPS system. So GPS has created tracking more easy, and it has also created a revolutions. And we all today use Google Map, and it's a gift from GPS system. Online shopping, e-commerce and auctions. eBay is a #1 e-auction site in USA, and today we also in India develop various sites which are doing auctions and selling the products online. Media file compression. Now many of you may not be aware about the magic of this JPG, MPG, MP3. Today
Earlier we have JPEG image and we used to get happy. Google was in a lot of JPEG image. Last year in Vibrant Gujarat startup seminar, we invited the convener of JPEG, the convener, the person who decide the various configuration for an image. If he's Todraj Ibrahimi is the name of that particular scientist who is a convener of JPEG. But at that, when we invited him, when he talked, then we came to know if this Todraj Ibrahimi change the configuration of image in Google, Google will disrupt. It won't be able to display the things the way it wanted to. And all the rights is with the JPG board and the convener committee over there. So think for a while, if music compression is not there, MP3 and MPG files are not there. Today we are carrying a lot of data with us. So how will you carry that particular data? Earlier we had the huge cassettes, CDs and all. They're very bulky. Today in a small pen drive or in the cloud also we are keeping our data and we can access to the music like anything, images like anything, and pictures like anything. It has created a huge revolution in area of satellite mobility, and cloud has created excellent internet services. Microfinance, Mohammad Yunus model is very famous today. Is honorary. I don't want to talk much about him, but yeah, Bangladesh is having Mohammad Yunus, and he brought the revolutions, and he made the life of lakhs and crores of people more easy with the help of microfinance. Photovoltaic solar energy, today everybody is talking about this solar energy, and through which probably we can enter into the right route of green hydrogen. Poly chrysalis and monochrysalis, these are two different structure which help in this. Large scale wind turbines, yes. Wind energy, probably India is contributing a lot, and there are many countries which are not totally relying on solar energy and wind energy. They probably rejected the option of thermal energy or hydrocarbons or coals, which we are using for producing energy. There are many countries. So wind turbines. Wind turbines has also two different type of structure. One is vertical axis and second one is horizontal axis. I don't want to go in much technical details, but yes, wind energy can also has also changed the world like anything. This is Forbes articles. Social networking via internet. Everyone knows the power of Facebook, Instagram, various chatting options and sites which are available. I don't want to discuss them in detail because we have scarcity of time. GUI, everything today which you see, which you drag and drop, is based on GUI, graphical user interface. So when Whitehead Jr. was talking that 3-year-old kid is doing programming, it's nothing but drag and drop. It's based on GUI. So in GUI make the life of people very simple. And see, everybody in mobile phone or computing or laptop or any services, cellular service providers, they all are understanding the user interface, how the user want the technology. So this is a big task where graphical user interface play a pivotal role in understanding. Digital photography and videography, yes, we all know Eastman Kodak was a company which is having a rule on more than 184 countries in the world that yellow wrapper and big fonts written on that Kodak films. I know we in our times we have 32 and 44 photographs capacity rolls were there. Why they disappear? Due to digital photography, the company vanished. Eastman Kodak bankrupted. So digitalization, brought a lot of revolutions. Radio frequency identification system and applications. RFID today, everyone is in bankings, or if we'll say for security. In school also now they have started RFID, using RFID, radio frequency, in library software, everywhere. If you say they are associated with RF, concerts are happening with RFID. So you just have RFID band and they'll change the music, they'll change the lighting and everything with the help of RF. So there's a craze of a lot of people. The last concerts, I'll not talk much about that, but it was fully technologically enabled concert and it got a tremendous success in Ahmedabad and various cities of India. Genetically modified plants, as I said you earlier, plants are now getting genetically modified in the labs, and these technologies are creating revolutions. Why am I talking about all these technologies? Because every technology is touching one or another faculty. Somebody must be from science, somebody must be from engineering, somebody must be from management background. This all technology touches everyone. So that's why I prefer to have this fourth technology, 30 technologies which has changed the world in last 30 years. So that's why I started with this. Biofuels, yes,
We are talking a lot of biofuels, and we can make also. And today, probably world is busy in reducing the carbon footprint. We are not able to reduce the carbon footprint. Rather, we are increasing the carbon footprint. So it's very difficult, absolutely, to get net zero. Almost 3 months back, we did a very first conference on United Nations Climate Change Committee at IIM Ahmedabad with a very known professor over there, and we deliberated the solutions for biofuels. What can happen? And you all will be surprised that the solution lies in our roots. I talked a lot about the cows and cow-based industry, and that wool also equally contributes. So bulls are normally valued as useless, but when I see and study the entire journey, then with cow dung you can have biogas, and in biogas, if you take this particular biogas to the remotest village, what you can do is the wastage of this cow dung and waste products, agriculture waste, and if you put them properly, then you can have the biogas grid. From biogas grid, you can have the organic fertilizer, which is liquid fertilizers. So you remove the slurry and you can have the remaining components as a, you can use as a compost or as a fertilizer in the farm. But same time, if you implant the microgrid in the particular village, many of you must have heard first time the word microgrid. Microgrid are the solutions to give electricity to small villages, because you will find the villages where people are hardly coming down from the mountain 3 times in a day. They don't have the time schedules like what we say 9 a.m. sharp or 5 p.m. precise. They said in सुबह दोपहर तिहाड़ी, सुबह दोपहर को और शाम को 3 टाइम ही उनको पता है. हम लोग, we are very fortunate that we live in an age where we can say sharp 5, 5:36, but there are hundreds and thousands of villages in India which exist who do not have this kind of time zone, because they live in mountain peaks, and if they want to bring something from the down, then they spend half a day on it. So it's a very life which is very tough. So we want to have microgrids over there. We want to give them the fertilizer, electricity, water, and biogas. So it solves the problem of all these things, which is a precise way of sustainability. Today, Reliance Group and Adani Group from Gujarat, they are actively searching for the implanting various compressed biogas, which is not CBG plants over there. So biofuels will be the next boon, and people will forget all this. They'll use the waste and they'll create the energy. Barcode and scanners, yes, everywhere today in the items you'll find the applications also now. With the barcode, the applications are there which can give you the information about the nutrition level, or whether on the index or on the absolute marks of 100, what is the nutrition value, and how this product get the marks in that particular standard. So if you'll have the barcode and if you'll scan, that application will tell you this product is getting 30 marks out of 100. It's not nutritious, you should not eat. And if you'll have the healthy products and you scale the barcode, then it will tell you it is having 80 marks, so you can eat this product. This is a healthy. So see, barcodes were earlier identified to give the price internationally, and in domestic market also, price, manufacturing date, other details. But now people are using the same application in more advanced way to give the ingredients, and they are also analyzing the ingredients and giving you the level of nutrition and how much this product is edible for a particular buyer. So barcode and scanners, they have also changed the way we live. Automated teller machines, yes, everywhere. Probably in India, the way you are finding ATMs, it's all gift from Mr. Deepak Parekh, who brought a lot of financial disruptions and technology disruptions in India from HDFC Group. And the way we have the network of ATMs, probably you'll not find that in Western world or Europe. It will go anywhere. Stands, very important thing today. Everyone is talking about stent. Earlier, probably they used to do bypass surgery. Then the invention of stent happened, and stent, the leading company in stent is Abbott, which is using cotton. Probably, if you'll see, the cost of stent is almost 89 to 100 rupees, but in market, if you see, they are charging 1,50,000 to 2 lakh, depends on the need of the customers. But these stands have changed the way probably human hearts are working. So now they have started implanting plants everywhere, not only hearts but other organs also. So stents are very important inventions for human life. SRAM flash memory, yes. This memory has increased over a period of time, and now if with every equipments on laptop or mobile phone, you will have this flash memory. This extra, which is add on to your existing memory and more will make your device more powerful. Antiretroviral treatment for AIDS, yes, it's very important. And
lakhs of people were dying earlier because of that. So antiretroviral treatment was great invention to the human life. In India, you won't believe we have certain Ayurvedic doctors. I tell them scientists, they invented with Ayurveda, they are curing the AIDS. And I have the papers and evidences over me because a lot of researchers, scientists, and doctors are meeting me every now and then. So they come out with wonderful research. Sometimes genius arrives not by choice, but by chance. As I said, you chance, serendipity. So this entire truth about that. The microwave Percy Spencer. Percy Spencer, engineer at Raytheon after his WWI stint in the Navy, was known as an electronic genius. And see, it is all chance. I'll show you some photographs. And we at our incubation center has developed the world's second and one of the largest fully automated pizza vending machine. And when we have developed and completed that, you won't believe I was so happy that we did it first time. Fully automated. There's no human intervention in the pizza, right from dough to no serving it in a box from the tailoring machine like this was invention. And microwave, obviously. Super glue, X-ray. Innovation means new combination of purpose and method. Michael Schumpeter is a very famous author for this, and his books are available on innovation. Innovation resulting qualitatively new products or process which differ significantly from former state. However, this is to be determined. So Paul Trott is one of the author who wrote a book on management of innovations, and he said, see, it's not always important for even startup ecosystem or entrepreneurs to find a new way or explore the new thing. What you can do is you can have invention, or you can have a great idea or inventions. You add a proper process for commercialization, and when you execute is equal to innovation. So innovation is nothing, but you will make small or big change in that, then probably it will become innovation, recognized as innovation. So innovations are resulting in a qualitatively new products or process which differ significantly from the former state. However, this to be determined. So uh, just a second. Just wait for a while. Let me join film. Yes. Just a second. Just a second. I'm joining. Yeah, yeah, no.
Sorry. So let me continue with the presentation. I hope things are moving. Kalpesh ji, ठीक चल रहा है? Am I audible? Yes, you're audible. Please go. ठीक चल रहा है, लोग बोर नहीं हो रहे ना यार, ये टू वे में नहीं होता तो डिफिकल्ट हो जाता है हमको ये करना. Yes, sir. Oh, सो बेसिकली मैं फटाफट इनोवेशन पे आ जाता हूँ और उसके बाद विल हैव सम पॉलिसी मैटर्स आल्सो. So innovation is a type and degree product innovation. It can happen. See, this is a framework which I am giving to you. So today, any of you may come out with an idea, or if something pop-ups in your mind, then we can go innovation with the type and degree, and probably product innovation and process innovation. There's a combination of product and process. There's a degree, as I said you, that's a basic and improved. Most of the time in India, number of time the debate happens when everyone is talking that we did lot in India in last 15 years, last 14 years, or whatever. I say them, you come out with one product which has been invented in India, and at the same time I give them the 100 products for which we can do and we can take the mileage right from zero. We take proud on that, but several other countries are also claiming that before Aryabhatta and our Veda and other things, our classic ancestral literature. So many of people are claiming. So let's see. Goals of innovation: improved quality, creation of new markets, extension of the product range, reduce labor cost, improve production process, reduce materials, reduce environmental damage, replacement of products and services, reduce energy consumptions, and conformance to regulations. So these are the various areas where you can see the innovation and other things. But let me share some quick facts on the same. Between 50 to 70% of innovation fails to impact an organization's goal. So it's not always that whatever you have innovated will work in the product. Any new product development, probably we used to talk that only 2% of the products are getting success. So if 100 products are launched, in marketing also, Dr. Kodler also wrote in his books, only 2 survives, rest 98 will die. It's a basic rule of that. Implications: wasted resources, time, people, and money, loss of moral, high resistance. Failure of innovations, various reasons are there. Common issues across all organizations are poor goal definition, poor alignment of actions to goals, so poor participation in teams, poor. So in startup ecosystem, we used to put a lot of stress on the team, exactly who come together for this. Poor monitoring of results and poor communication and sense of community. 75% of ideas fail. As I said, you 3 possible outcomes for your ideas. You continue with the idea, 25% of chance of success. You stop idea but start a new idea, increase chance of success, and you stop the idea and so save the time and money. So I always used to say that there is no need to reinvent the wheel. See what we all are doing. We are getting busy in reinventing the wheel. आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको इम्प्रूव करिए ना, जस्ट उसको फिर से बनाने की क्या जरूरत है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कार्स में होता है, टू व्हीलर्स में होता है, बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स में होता है, इवन डेटा में, एआई में, चैट जीपीटी में, सब में देखिए ओपन एआई ने काम कर लिया है. उसके बाद जो जो बड़ी बहस चली थी हमारी, डिपसिक की बात चली थी, तो डिपसिक की बात कर रहे थे कि तो उस टाइम पे ऐसा था कि एलन मस्क ब्रॉट उनका जो स्टारगेट प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, तो स्टारगेट का प्रोजेक्ट उन्होंने इनको नहीं दिया, वो ही हैज गिवन टू द लैरी एलिसन को दिया, और हमारा जो ओपन एआई फाउंडर सैम ऑल्टमैन को दिया, और उसके साथ उन्होंने जोड़ा, एमजीएम ग्रुप को जोड़ा, एंड यूनाइटेड अरब अमीरात्स वाज देयर ऑन बोर्ड, and software from Japan was there. So $500 billion project for artificial intelligence. So everybody was shaken that what these people will do with $500 billion is a huge amount. So what happens normally? The Western world comes out with big vision, big things, and big ideas. And they were talking about these big Stargate projects and everything, $500 billion investment, Sam Altman. And obviously, Elon Musk didn't like it. And Elon Musk said that, do you have the money, $500 billion? Sam Altman then replied on a Twitter that those who have doubt on the project Stargate, they can check the first phase is in pipeline, and we have started data center. So meantime, probably Lian Fingwing
come out with DeepSeek and see what is the difference. I'll explain you in Indian rupee. If you want to start a data center with fully automated systems and artificial intelligence, and if you propose a cost of 850 crore rupees to run the center, what Lian Fengwing did is that he comes out with only 50 crore rupee. So DeepSeek has brought the revolution. He didn't reinvent the wheel. If you could have done this, then this could took many of the years of his life, lot of resources. But what happened? 850 crore project now become 50 crore projects. And these Chinese people are doing the same thing with us for the years. And we always are fighting, how can we beat the China? In brushless direct current motor, I worked 5 years to defeat them. Still, I found in air conditioner or two-wheeler or four-wheeler, I'll find the batteries which are originally built and assembled in China. So in chemicals also, in textile also, in non-woven also, in furniture now, it's a big boon now in furniture. You won't believe in Gujarat, in our prosperous city, people are buying the furniture of 1 crore or 1.5 crore, 2 crore rupees from China. Right from container to sofa, everything they are bringing from China. So this is creating a new nuisance. In spite of boycotting them, now we are entering into more territories where we had little over age over that. Our carpenters, our goldsmiths, and our artisans, all of them, they will suffer because of this, because we are directly importing from China. So our aspiration now has created a nuisance for the society. So in lot of territory they have entered. So and I really afraid that what will happen to this. Failure survey of 39 new products, 14% made it to the market. Now see, these are the facts. Booz Allen and Hamilton 1981, they came out with the survey. 65% of this succeed and 91% of new products failed, representing the almost 50% of the investments. And what were the success factors? Fit with the market need, fit the company strength and technical mastery. Survey of 200 failed products they have done. This is a success. 3,000 ideas. Now this is a funnel known as the classic case funnel. Okay, 3,000 idea. If you'll see success, and only one idea get the success and classic execution. Now we all need to understand as a faculty. You may be mentoring many of the students in your surrounding. You may be mentoring many of your friends, being a professor over there in your respective colleges. But this is a bitter truth that whatever we do, but there's a ratio. 1 out of 3,000 ideas get execution and success. It's very difficult. This funnel is very dangerous. Many times, probably, it's not always like that. We got this kind of results in startup ecosystem. We got very fantastic and promising results also. I can tell you the story of a student. Let me stop this technical things and give me 2 minutes to crack the story. A student way back almost 11 to 12 years, when he was just having the age of 20, 21, he was wondering with a small software and approached to my friend, and he wrote a mail to my friend and said that I have a beautiful idea and I want to expand this. My friend who is based at Gujarat also only, and he revert like normal professors or you people are doing. You have developed a wonderful idea, all the best. So after a month, he again wrote to my friend that, okay, fine, the idea is good and best, but I need your mentoring. I need your support. How should I scale up? How should I take this idea forward? He was then bewildered, confused. He said what to do with the student. And he forwarded this mail to one of the professors at USA. And then he replied, this guy, that I have forwarded your mail to one of the US professor. Now, see, it's very promising. No, one your mentor has helped you like this. So that guy was excited. He said, oh, my things will be taken care of because my idea now has reached to the US professor. So after 1 month again, he asked my friend that what are you doing? He said, I am at Ahmedabad. Okay, I am now at Kalupur railway station, Ahmedabad. I've reached to Gujarat. I'm at Ahmedabad railway station. I want to meet you. He said, fine, this is my address. You can meet me. He met and he said, can I stay at your home?
He said, ये तो यार जबरदस्त आदमी है, चिपकू ऊपर पड़ रहा है, but as a human, as a good mentor, startup ecosystem player, he said, fine, you can stay. At that point of time, he was doing a job. He was sitting at IIM Ahmedabad. It's the world's Asia's #1 B school. So after a couple of days, he said, I want to come with you and want to see what Asia's #1 B school is doing. He said, you need to take a permission. He said, you are doing job over there. Why should I take the permission? You take me along and show me. He said, fine, you can come. So they both went to IIM Ahmedabad, and my friend said, that young chap said, I want to meet some few professors if I can. He said, no, you can't meet because they have the RAs and you need to take an appointment and then only you can meet them. They're very busy people, they're big strategists. He said, no, but you are serving here, you can do something. So he managed Professor Jain over there, and he said, this is a young guy and he invented this. He want to develop an application. I said, fine. This guy told Professor Jain, no, sir, you are teaching strategic management. He said, yeah, for last 25 years, great. Sir, will you join my company? He said, your company is not made of, you have just idea. But he didn't say convey it properly. Hey, sir, join my company and I'll give you a stake. And this professor was just thinking. He said, I'll give you 5% stake in my company. And professor was literally annoyed. If you or me, if you could be there, we might have said that expect 50% stake. He said 5% stake. To IIM professor, who is a legendary professor who taught 25 years in Asia's #1 B school. Now this professor was angry, but he just overlooked the student and said, fine, yeah, thank you. I don't want to join and I have other priorities. Then my friend said, yeah, when will you go back? He said, 2-3 days, let me stay and I'll go. Then he went after 2-3 days, and after 6 months, he got a call at midnight from that professor at USA. He said, you remember you sent me a project ID of one student? He said, yeah. Today, he said, today's interview is published in New York Times. My friend was totally confused. Oh, what happened? What he did now? He said, because at that point of time, they were running the challenge, Peter Thiel and all, they were running the challenge of $1 million for the young aspiring startup enthusiast. So he won a challenge over there of $1 lakh. And he was literally shook away. Oh, this guy did wonders. After 5-7 years, this guy has developed a company called Auroville. Today, you all know the guy as a Ritesh Agrawal and established Oyo 2-3 years back. Oyo was having a valuation of more than 60-70,000 crore rupees. And then laughingly, when we discussed and talk about the professors who sacrificed 5% stake, I used to say you could get 3,000 crore if you have said yes to Ritesh. So see, chances and serendipity happen. It's not like always that ideas get failed or people get failure. Sometimes you may encounter the positive stories also. Process of innovation. I'll not bring you in more detail because you all know theoretical perspective, idea generation, goal setting, and everything. Let me see if you have any question. You can. Thank you. Somebody wrote a great story. Yeah, it's an original story of Ritesh, and it happened to one of my students with whom Honorable Prime Minister talk. His name is Mayur Patil, and he invented one filter which increased the fuel efficiency of petrol and diesel by 15 to 20%. And he participated in one of my incubation event called Fundbuster 1.0. I mentored him. After 3 to 4 months, I'm tired, and I said, now I'll meet, but I was not giving him a time. That product was good. I was trying to pitch, but I know somehow there were no takers. So one fine Sunday, he sent me 2 WhatsApp message. I clicked on that message and immediately started, hello Mayur ji, kaise ho karke. Honorable Prime Minister Modi ji was talking to this guy. He talked for almost 10 minutes to this person. मैंने देखा कि अरे यार, मैंने उसको लिखा मैसेज कि यार ग्रेट नाउ मोदी जी आल्सो नोज यू एंड ही डिस्क्राइब योर सक्सेस स्टोरी, नोबडी कैन स्टॉप यू. तो उसने मैसेज लिखा मेरे को, सर मोदी जी से बात हो गई लेकिन आपसे बात पेंडिंग है, आप मेरा फोन को रिस्पॉन्ड नहीं करें, टाइम नहीं दे रहे. मैंने कहा चलो भी कल मिल लेते. फिर नेक्स्ट वीक मैंने उसको बोला कि देयर यार दिस गुड फिल्टर एंड इट इंक्रीज द फ्यूल एफिशिएंसी, इफ एनीबडी कैन
हाँ, तो मेरा एक दोस्त इन्वेस्टर था, उसको बोला, मैंने बोला एक क्रेडिट लाइन देके कुछ वैल्यूएशन करके इसको इन्वेस्ट करिए यार, इज अ गुड गाय। तो मैंने कॉल सेट कराई, 2-3 मीटिंग हुई, लास्ट में 11 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने सेट किया। अब देखो खाली प्रोडक्ट ही था उसका, फिल्टर, फिर भी आई इंसिस्टेड 11 करोड़ वैल्यूएशन, सब फाइनल हो गया। नेक्स्ट डे वो भाई साहब ने फोन उठाया नहीं, तो इन्वेस्टर का मेरे पे फोन आया, यार यू आर टेलिंग, तो बहुत बोल रहे थे कि इसको पैसा दो यार, ये करेगा वो करेगा, अभी वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, टर्म शीट इज रेडी। मैंने उसको कॉल किया, मगर क्या चल रहा है यार, क्या क्या हो रहा है, व्हाई आर नॉट पिकिंग द फोन? ही सेड, भाविन भाई, आई डोंट वांट टू टेक वैल्यूएशन ऑफ 12 करोड़ रुपीस। मैंने बोला क्या हो गया, कल तक तुम कोई 10 लाख रुपया नहीं दे रहा था। बोले सर ऐसा है कि मेरे को ये पैसा भी उठाना नहीं है, बिकॉज टोयोटा ने, मेरे जो पायलट्स हो रहे थे ना, वो देखा है, टोयोटा में इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपीज इन दिस कंपनी फर्दर। सो दिस मे हैपन टू एनी ऑफ द आइडिया प्रोजेक्ट, और the young chaps who are in your surroundings, they may come out with wonders, the valuation may soar and rise. That's all sometimes serendipity. So yes, startup ecosystem is that kind of thing where you'll find things are moving and happening. Innovations may be radical and disruptive and incremental sustaining. So incremental versus radical. Most innovation nowadays are incremental. Radical में हम जाते नहीं, because we are not thinking crazy. But I ask and insist all of you to ask your student to think crazy. And everybody today is thinking out of the box. Out of the box नहीं है, incremental भी चलेगा अपना. Danger of getting caught unaware by the newcomers and all. So radical innovation. If you cannot beat radical innovators, your best chance to stay relevant to your markets is to become one. ये thought है radical innovation करने के लिए, create new markets and everything. I'll not enter this is a chronology of the events. Telephone, light bulb, television, atomic bomb, 1945, computer, floppy disk, compact disk, CD, WW, Tim Berners-Lee, 1991, cell phone. अब देखो 35-40 साल में दुनिया कितनी बदली है. SMS, short messaging services. Shabir Bhatia, you all must be knowing Shabir Bhatia, was an inventor of Hotmail. He was an inventor of email. And I still remember in 1999, 2000, he sold out Hotmail with $50 million. At that time, probably the valuation was 2,000 crore rupees. So then he started Arju.com, and this is a history. तो ये सब इनोवेशंस होते हैं, और हमारे यहाँ से भी हुए, संजय गुप्ता है, संजय तल्ले का है, इंटेल के फाउंडर विनोद धाम है, a lot of innovators from India in computer domains, other domains, who did wonders in that. So the capacity to innovate and make life better is present in each individual. Everyone carry that particular capacity. Without radical innovation, there is no economic growth. When Elon Musk is known, we used to talk about Elon Musk way back 10, 12. Peter Thiel, 0 to 1 is a book which all of you should read. Peter Thiel nicely wrote that particular book, और आप सब भी पढ़िएगा उसकी ये सारी बुक. तो थिंग्स आर हैपनिंग, और जब एलन मस्क कर रहा था, ऑनेस्टली मैं आई वाज थिंकिंग इज अ क्रेजी, बिकॉज व्हाट ही इज टॉकिंग है ना, स्पेसएक्स की बात हो रही थी, टेस्ला, निकोला टेस्ला की टेस्ला उसने टेक ओवर कर ली थी. हिज मूव्स वर वेरी रेडिकल ना, कोई इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था. तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये कहाँ पे जाएगा, एंड लेटर ऑन ही बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. तो ये हमारे सामने हुआ है कि लोग और दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है. हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैंने, ये आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गया ना, अभी 10-15 मिनट है. 5-10 मिनट में एक और चीज आपसे फटाफट से शेयर करूंगा. और उसके बाद 2-3 लोग दिखाता हूं मैं आज आपको, एंटरप्रीनियरशिप के लोग दिखाता हूँ, जब स्टार्टअप नहीं था तब दुनिया कैसी थी. इसमें 3 लोग जो मेरे फेवरेट है ना, उनको दिखाता हूँ मैं. जस्ट अ सेकेंड. इज द स्लाइड विजिबल, कल्पेश जी? Yes, yes, visible. Yes, yes. ये देख लीजिए भाई साहब,
और कुछ ऐसे कल्पेश जी इनको लोग दिखा रहा हूँ जो दुनिया में सालों तक ऑल टाइम अमीर रहे, ऑल टाइम अमीर। इसमें से एक है, आप सबने सुने होंगे, रॉकफेलर। रॉकफेलर फाउंडेशन दुनिया बहुत सालों तक चला, 1839 से 1937 उनकी जो रही है लाइफ। वो अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट थे, फिलांथ्रोपिस्ट थे। रॉकफेलर फाउंडेशन ने बहुत किया है और बरसों तक। रॉकफेलर वाज बोर्न इनटू अ लार्ज फैमिली एंड upstate New York, who moved to several times before eventually settling in Cleveland. And he became an assistant bookkeeper at the age of 16, went to several business partnerships beginning at the age of 20. जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं ना लाइफ में, 16, 18, 20, वो लोग कहाँ पहुंचते हैं? कंसल्टिंग इज बिजनेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। और दुनिया में सारी रिफाइनरी बाद में रॉकफेलर, दुनिया का ऑयल रिच पर्सन बोला जाता है रॉकफेलर, जो दुनिया को खरीद सकता है। रॉकफेलर बिकम द कंट्रीज फर्स्ट बिलियनर, दुनिया का और अमेरिका का पहला जो बिलियनर था वो रॉकफेलर था। worth of 2% of the national economy की उसकी wealth थी। इस पर्सन was estimated 1930 was $900 million। आज उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से गिने तो आज 2020-22 में होता है $26.6 बिलियन और उससे ऊपर जाएगा। तो हुक वॉर्म एंड येलो फीवर, ये रॉकफेलर है जो ट्रू एंटरप्रेन्योर था। एंड्रू कार्नेगी, कार्नेगी मेलन, और उस पर काफी सारे उसने लाइब्रेरीज, और एंड्रू कार्नेगी ने कंप्यूटर साइंस के इंस्टीट्यूट खोले हैं। वो स्टील इंडस्ट्री के थे। वो जैसे रॉकफेलर ने ऑयल इंडस्ट्री में दुनिया में नंबर 1 था, ऐसे कार्नेगी बरसों तक इंडस्ट्री 19th सेंचुरी इज वन ऑफ द रिचेस्ट अमेरिकन इन द हिस्ट्री। वो कार्नेगी बना और वो स्टील में डील कर रहा था। द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ 1989 में। और ये सब लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि जो एंटरप्रेन्योर कैसे होते हैं। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर लोग बोलते हैं कि ऐसे, और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो जुगाड़ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, who do the ties with government, थोड़ा यहाँ वहाँ करके। But these were the entrepreneurs. Later on, everyone does this. It's not like that. There are systems and they used to manage. They manipulate also. Industrialists manipulate the system. We all know. Nothing to hide. Carnegie also started working as telegrapher, and by the 1860, he had investment in the railroads, sleeping cars, bridges. Steel industry is a, and Carnegie Steel Company was too huge. We sold to JP Morgan को 1901 में. JP Morgan is also known. JP Morgan and Chase will see bank or instant banker having a 200-year-old history and having a branches in 200 countries of the world. वो JP Morgan Chase है. तो Carnegie was also like that. बर्नार्ड आर्नोल्ड, आप सब जानते हैं, LVMH नंबर 3 की रेस में हमेशा होते हैं रिचेस्ट पर्सन में, बर्नार्ड जेल आर्नोल्ड। तो उनकी लुई विटन जो ब्रांड है, एवरीवन नोज इट। वो LVMH जाना था, मो हेनेसी लुई विटन, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन लाइक दैट, मो हेनेसी लुई विटन, LVMH। तो वो एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, दुनिया में पर्स से लेके परफ्यूम तक LVMH का चलता है। लुई विटन देख लिया, खत्म हो गया। ये लोगों ने ब्रांड बनाई है और दुनिया में पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रांड्स। And Bernard Arnault's history, 75 fashions and cosmetic brands, including Louis Vuitton and Sephora. LVMH acquired American jewelry, Tiffany, Whitney, सब इनका है 2021 में. Small fortune customer. So this was a story of 3 of my favorite entrepreneur from the Western world. अब मैं हरीडली लास्ट 5 मिनट में आ जाता हूं। मैं इनको थोड़ा पॉलिसीज के बारे में बता दूं कि गुजरात में क्या है। ये पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया है, तो मैं उनको अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस अक्रॉस इंडिया। इंडिया, या सो मैं गुजरात का थोड़ी आपको एक यूज केस बताता हूँ, बिकॉज इन लास्ट 3 years probably I have been in policy making of Gujarat State Biotechnology Mission. I have been in policy making of IT policy, government of Gujarat, and I have been in policy making of industry commissioner policy, which is currently running on up to 2025 हमारी पॉलिसी चलेगी। तो 2016 से 25 तक 10 साल तक मैं पॉलिसी मेकिंग में रहा हूँ। सो ओवर यूज केस में आपको थोड़ा एक दिखाता हूँ, एंड देन दुनिया में भी क्या चल रहा है। उसके बाद 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर करिएगा, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। यू विल हैव लॉट ऑफ टेक अवेज, बिकॉज सी ऑडियंस आई कैन नॉट स्कैन बिकॉज इट्स ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। अदरवाइज मैं आपको वो करके देता और वही आपको चीज देता जो आपको चाहिए। विजिबल? यस विजिबल। सो दुनिया में अभी क्या इमर्ज हो रहा है, हम फटाफट से देख ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और
आपका अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स इन द बर्स टुडे, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एआई. एआई इज नथिंग, मैं आपको सिंपल समझा दूं कि यूजेस ऑफ हार्डवेयर टूल टू प्रोसेस सॉफ्ट डेटा पॉइंट्स. आपके कहाँ कहाँ पे डेटा पॉइंट्स है, उसका वेल डिफाइंड एल्गोरिदम को यूज करके स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर टूल से कंप्यूटर, जो लोग नॉर्मल, मैं ये लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे एआई क्या है. एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट एआई, लेकिन ये कुछ नहीं है बट सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर इक्विपमेंट से आपके सॉफ्ट पॉइंट्स डेटा को वेल ऑर्गेनाइज मैनर में रिट्रीव करना, कहीं पे लाना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेकिन इसके सामने मैं हमेशा ओरिजिनल इंटेलिजेंस जो मैं बोलता हूँ उसकी एडवोकेसी करता हूँ. बिकॉज today if you'll see, we are now more dependent on ChatGPT, or we are searching in Google, we are doing the phone numbers and we just refer a mobile. तो मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ओरिजिनल इंटेलिजेंस पे भी इतना ध्यान दो, क्योंकि हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं कि नाउ वी फॉरगॉट टू रिमेंबर द थिंग्स. चैट जीपीटी को पूछते हैं, हिस्टोरिकल डेट्स भूल जाते हैं, फोन नंबर्स भूल जाते हैं. बट ओरिजिनल इंटेलिजेंस तभी रहेगा जब आप ये सब चीजों को थोड़ा दरकिनार करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, यस, मशीन लर्निंग एज अ शेड्यूल, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए जो है पूरा जो रिवॉल्यूशन लाएगा. इंडस्ट्री 5.0 की बात हो रही है. इंडस्ट्री 4.0 में सब चीजें थी, आपका टेक्नोलॉजी था, सॉफ्टवेयर था, ऑटोमेशन था, सब था. लेकिन उससे आगे भी एक चीज जो है वो है इंडस्ट्री 5.0, और उसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो कमाल दिखाएगा. स्मॉल एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, उसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक वंडर जनरेट करता है. आप सोचिए, एक इमेज प्रोसेसिंग का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मारुति सुजुकी के प्लांट पे एक बार गया, उसके प्लांट 7 प्लांट्स हैं यहाँ पे, जेबीएम के, जय भारत मारुति ग्रुप्स के. जेबीएम इज सप्लाइंग मारुति सेवेंगा, सुजुकी मोटर्स इज सेवेंगा 30% स्टेक इन दैट. तो दे आर मेकिंग द फ्यूल पंप्स, और उसके लिए पाइप कट कर रहे थे, और मुझको बोला सर पाइप मिक्स हो जाती है फ्यूल पंप्स में, कभी ये बड़ी चले छोटी चली जाती है, इसमें 100 में से 2-5 तो हमारी दूसरे वाले चली जाते, क्या करना चाहिए. ऐसे सिंपल से इमेज प्रोसेसिंग, आप सब पाइप को नंबर तो दे रहे हो ना, बोला हाँ नंबर दे रहे हैं, नंबर दे दो, उसको डेटा स्टोर कर दो, इमेज प्रोसेसिंग करा दो, जैसे ही पाइप गुजरेगी, इफ द नंबर इज ऑड विच इज नॉट फ्रॉम द सेम बैच, वो उसको अलग कर देगी. आप मानोगे नहीं, मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ, सिंपल इमेज प्रोसेसिंग सॉल्व से उनका बड़ा प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो गया. सो दैट इज द मैजिक ऑफ इमेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल. आज सब माने कि नहीं माने, इमेज प्रोसेसिंग, मैं जैकी चुअन का एग्जांपल दे रहा था. चाइना में ऐसा हुआ, कॉन्सर्ट हुआ, तो वो कॉन्सर्ट में दे अनाउंस एंड पुलिस केम ऑल ऑफ अ सडन. कॉन्सर्ट के बीच में 3 चोर्स जो थीव्स थे उनको उठा के ले गई. ये एग्जांपल मैं हर को देता हूँ क्योंकि उस टाइम पे जब मैं 7-8 साल पहले ये सब पढ़ाता था, 8 साल से ज्यादा शायद, तब चाइना का टारगेट था हर एक 8 चाइनीज के बीच में कैमरा होना चाहिए. और वहां पे उनके सिस्टम में उस टाइम पे 17.5 करोड़ शुरुआत में कैमरा इंस्टॉल थे, उसके बाद बड़े 20 करोड़ हो गए, 40 करोड़ हो गए. सो देयर इज अ वेव ऑफ कैमरास, नो यू कैन नॉट बी आउट ऑफ द कैमरा रीच. तो जैकी चुआन करके उनका कॉन्सर्ट चल रहा था, 3 चोर को पुलिस पकड़ के ले गई. बाद में पता चला कि साला उनकी इमेज प्रोसेसिंग इतनी पावरफुल थी कि हुडी से उन तीनों चोरों ने 75% अपना फेस कवर किया था, फिर भी डेटा पॉइंट्स में वो इमेज में डांस कर रहे थे. तो कॉन्सर्ट में से इमेज प्रोसेसिंग में ये आया कि इनकी शक्लें, ये 3 जो रॉबरी हुई थी उनसे मिलती है, तो पुलिस आके उठा के लेके जाती. इज अ वंडर ऑफ टेक्नोलॉजी. And that is going to happen sooner or later in India also when we come out of the state of the art surveillance and monitoring centers. Machine learning, yes, you train the machine, so it will learn and then behave accordingly. वो मेडिकल साइंस में जितना यूज हो रहा है, ये इंजीनियरिंग में इतना यूज हो रहा है, प्रोसेस में इतना यूज हो रहा है. ब्लॉकचेन इज, आप देख रहे हैं सब क्रिप्टो की बात कर रहे हो, अलग अलग एक्सचेंज है सारे, और आपको 200 से ज्यादा अलग करेंसी मिलेंगी. तो फाइनेंस से लेके एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन हर जगह चलता है. ब्लॉकचेन सेट ऑफ डेटा वेयर सिक्रेसी कॉन्फिडेंशियल क्लॉज एंड एवरीथिंग इज मैनेजर्स. लूप में वो लूप खत्म होता है, दूसरे लूप कुछ पता नहीं होता, नया लूप है. बट एवरीथिंग इफ यू आर मैनेजिंग विद टेक्नोलॉजी, जैसे डाबर वाले सबसे पहले वो हनी का लेके आए थे कि आप स्कैन करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन से फॉरेस्ट से कहाँ से कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, उसकी ग्लास की जो बोतल है वो कहाँ से है. सो एवरीथिंग यू कैन नो. So blockchain has a lot of application. So blockchain is also equally prominent nowadays. यही मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया है. न्यूरल नेटवर्क्स, यस, न्यूरल नेटवर्क्स की तरह हम मेडिकल साइंस में न्यूरल नेटवर्क यूज करते थे. सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऐसा आएगा फ्यूचर में कि आपके जितने भी कैरेक्टर सिम्टम्स है, आजकल सब लोग उसको कंप्यूटर में डालना शुरू के, सारे डॉक्टर्स भी करते हैं. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सिम्टम्स डालोगे आपको पता चल जाएगा कि विच डिसीज यू आर सफरिंग फ्रॉम. तो डॉक्टर का डायग्नोस पार्ट तो चला ही जाएगा, क्योंकि आप सिम्टम लिखते हो, सामने रेडीमेड पैकेज आपको चैट जीपीटी बता सकता है, या आपको वो सिस्टम बता देगी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस.
दिस इज अ बिग बून यार। आप अपने सिम्टम डालते हो, आपको पता चलता है, डायग्नोस डॉक्टर की डिमांड ही चली जाएगी, वो उसको जरूरत ही नहीं है, आप डाल दो, सिम्टम्स डाल दो, यू विल गेट। बट ह्यूमन टच अलग चीज है, बट ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन है। कभी कभी हम बोलते हैं कि जब हमारे एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रोफेसर ने ये डेवलप आर्टिफिशियल लीवर, तो ये 10 साल पहले जब हम उसकी बात करते थे तो मैंने बोला कि साला आर्टिफिशियल हार्ट तो था जो 24 घंटा तो सर्वाइव करता है, अभी तो 48 आवर्स तक सर्वाइव करता है। तो मैंने बोला एक पॉकेट में आपका वो लीवर आप पॉकेट में भी रख सकते हो। मैंने आर्टिफिशियल लीवर डेवलप किया था। तो आप सोचिए कि फ्यूचर ह्यूमन बीइंग कैसे हो गए, एक पॉकेट में हार्ट है, एक में लीवर है, इंसान चल रहा है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज वेरी सीरियस थिंग्स एंड साइंटिफिक इनोवेशंस व्हिच आर हैपनिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यस, एनएलपी का बहुत डिमांड है, लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। और एनएलपी इज अ सॉल्यूशन ऑफ मेनी थिंग, इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, एक्सपर्ट सिस्टम इंटेलिजेंस नेटवर्क्स है, न्यूरल नेटवर्क्स है, ये सारी चीजें है न्यूरल। उसकी आर्किटेक्चर डीप लर्निंग है, डीप टेक है। डीप टेक की पॉलिसी हमने काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, उसने उनको रिक्वेस्ट की थी, लाइस वाइब्रेंट में हम डीप टेक पॉलिसी लॉन्च करने वाले थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है, डीप टेक की पॉलिसी पे काम कर रही है। सुनर विल इंडिया विल हैव द न्यू डीप टेक पॉलिसी, वो शायद 2-3 महीने में आ जाएगी। सो डीप लर्निंग इज ऑल अबाउट दैट कि नो हाउस को डेवलप करे, टेक्नोलॉजी को और डीप जाए, उसके ऑल एल्गोरिथम समझे, उसको मोर सिंप्लीफाई करे, एंड दैट इज ऑल अबाउट डीप लर्निंग एंड डीप टेक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस। मशीन लर्निंग, यस। ब्लॉकचेन, यस। गुजरात इंडस्ट्री पॉलिसी में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन अवर मिनिस्टर इंडस्ट्री पॉलिसी को मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग चीजों के लिए है। कैटेगरी 1-2 पे हम सब्सिडी देते हैं, 25% ऑफ कैपिटल सब्सिडी 1 करोड़ 40 लाख पे देते हैं। स्टार्टअप में हम 30 lakhs तक देते हैं उनको, नॉन रिफंडेबल। 3 लाख उनको देते हैं हम, उनको कहीं पे परस्यू करना एक्सेलरेशन सेंटर। 3 लाख हमको हम उनको देते हैं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1 लाख देते हैं उनको स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए। सो वी गिव लॉट ऑफ मनी टू स्टार्टअप्स इन गुजरात। 37 लाख का बेनिफिट देते हैं। स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 है, जब हम उनको पेटेंट के पैसे देते हैं। 500 करोड़ की ये पूरी पॉलिसी थी। पीओसीज वगैरह कराते हैं, टारगेट हमारा है 500 स्टार्टअप्स का। और ये सब पॉलिसी बेनिफिट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2.5 लाख रुपीस तक हम पॉलिसी बेनिफिट देते हैं बच्चों को, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। और अभी हमने स्केल किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कि स्कूल के बच्चे भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेके आएंगे, आइडिया लेके आएंगे, तो हम उनको 20,000 तक देते हैं। सो 500 करोड़ तक हमने फंड रिजर्व किया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। आईटीएस पॉलिसी में हम 25% फ्लैट सब्सिडी अप टू 500 करोड़ देते हैं, तो उसकी कैपेक्स और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे। तो आईटी पॉलिसी है, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी है, बायोटेक पॉलिसी है, सारी पॉलिसीज आप देखो कि वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप फॉर बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। Thank you very much. I give little light on innovation, invention, startups, couple of stories, ecosystem. I could not speak much on investment part, how we should create the team, but that is a later part. काफी सारे स्पीकर्स हैं, आके धीरे धीरे टीम फॉर्मेशन का बताएंगे आपको, फाइनेंस कैसे अवेल करना है वो बताएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट का क्या रोल है, एंजल्स का क्या रोल है, फ्रेंड, फूल्स एंड फैमिलीज, ये 3 होते हैं जो सबसे पहले आपको पैसा देंगे। फूल्स बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फूल्स ही हमको पैसा देंगे ना, कोई होशियार आदमी हमको थोड़ा पैसा देगा आइडिया को। तो फ्रेंड, फूल्स एंड फैमिली 3 F आपको सबसे पहले देंगे। और उसके बाद थोड़ा सक्सेस हो गया तो कोई एंजल आएगा, उसके बाद वीसी आएगा, उसके बाद प्राइवेट इक्विटी आएगा। एक आपकी जर्नी होगी अगर आप स्टार्टअप को समझा रहे हो, और उसको आप पब्लिक इशू तक ले जा सकते हैं। आज मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टार्टअप जो ग्रो अप हो चुके हैं, वो मोटा मोटी आप देख लीजिए कि पब्लिक इशू तक लेके आए हैं, काफी सारे पब्लिक इशू हो गए। दिस मे बी द आइडियल स्टार्टअप जर्नी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू कल्पेश भाई फॉर योर precious time. If someone want to ask anything, Yes, you can. thank you very much, Dr. Bhavin. Yes, participate any question query from your side. So we can take a couple of, you can raise your hand or put the question in the chat box. Anything. Yes, please, any participant, you can raise your hand or put the question in the chat box. Sir, like any your experience in other state, like in Gujarat or other state, what they are doing on entrepreneurship, like maybe because you participate in different states, and I have seen faculties are not aware about schemes because I also keep giving lecture in startups. We are a part of ecosystem for long. So yeah,
Dr. Anil Singh, sir, what should be done and increase the success rate of 2%? There's a question in the chat box. Dr. Anil Singh. Very, very, very important questions, because see, this 2% is now annoying everyone. In India also we are talking a lot. Modi ji also took a lot of initiative. Piyush Goyal ji also took a lot of initiative. But this 2% is not improving, because see, everybody is busy, as I said, you reinventing the wheel. तो टीम फॉर्मेशन ऐसे नहीं करते ना, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट डेवलप हो चुकी है, अगर आप उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए काम करेंगे, सो यू आर पुटिंग लिटिल एनर्जी ऑन अ डेवलप थिंग्स. और यही चीज अब देख लीजिए कि वैल्यूएडिशन करना सीखिए. मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज की वैल्यूएडिशन कीजिए. और टमाटर हमारे यहाँ पे, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मेरे बगल में एक काफी सारे गांव है, टमाटर बनाते हैं और फिर उसकी प्राइस नहीं आती, बहुत सारे उग जाते हैं, उसको फेंक देते हैं. लेकिन कोई उसको सॉस नहीं करेगा, कोई उसको ड्राई नहीं करेगा, कोई उसका पाउडर नहीं बनाएगा, वरना उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. वो पाउडर 200 रुपए किलो में बिकता है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और ये सोचिए कि इसके वैल्यू एडिशन पार्ट पे सोचिए कि कोई भी चीज है, बेसिक चीज है, उसकी वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं. अगर आप वो समझ गए, दूसरी चीज है आपका फिनेंस. नोबडी अंडरस्टैंड फिनेंस. ग्रांट्स, सब्सिडीज, ये सबसे बिजनेस कभी होता ही नहीं. लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वो फायर एंड बेली वेरी एसेंशियल उससे होता है. वो फाइव बोलता हूं मैं, FIVE. तो वो अगर आप में पेट की आग नहीं है, अगर आप डेवलप करना नहीं चाहते, अगर आप पैशनेट नहीं है, खाली ग्रांट्स के लिए या किसी ने बोला इसलिए स्टार्टअप में आए हैं, तो वो काम नहीं होगा. मैं आपको ऐसे हजारों लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड विद 30-40,000 एंड दे हैव बिल्ट द एम्पायर. ऐसे गुजरात में. तो 2% के लिए आप समझ लीजिए कि पहले वैल्यू एडिशन पे फोकस करना चाहे तो आप पहला काम वैल्यू एडिशन पे कीजिए. दूसरा पार्ट साइंटिफिक, जो मैंने बोला, टेक्नोलॉजी डिसरप्शन पे कीजिए. ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी, अगर आप रियली पैशनेट है तो ऐसा टेक्नोलॉजी निकालिए. या देखो, ये उबर वाला है जिसका हमने सारे जो मल्टीनेशनल्स है ना, उसका कॉपी करके इंडियन स्टार्टअप बनाए सारे. कार रेंटल हो या रूम रेंटल हो, सब भी वो कॉपी. नथिंग रॉन्ग इन इट. मैं खराब मानता ही नहीं. हमारा बिजनेस हो रहा है ना. मैं क्विक कॉमर्स को भी खराब नहीं मानता हूँ, वहां पे शुरुआत हुई थी, उसको भी मैं खराब नहीं मानता हूँ. लेकिन चीज ये है कि कहीं ना कहीं तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास एंसेस्ट्रल विजडम और साइंस है. आज भी हमारे पास काफी डिबेट्स होती है. वी हैव द फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट इन द वर्ल्ड जो वंडर्स कर सकते हैं. हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं. कोविड में सबने मान लिया था कि इंडिया का आयुर्वेदा है साला. वो काढ़ा पी पी के लोग तो इतने इम्यून हो गए कि वहां पे जब यूके परेशान था, US परेशान था, मोर्टालिटी जबरदस्ती, तब इंडिया में कंपेरेटिवली काफी कम था. उसका सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे जो यूनानी सिस्टम बोलते हैं या आयुष मंत्रालय बोलते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, हेमा, जो हमारा पुराना साइंस है, आप सब कुछ छोड़ लीजिए. यू पिकअप अवर एंसेस्ट्रल साइंस, उसमें से 2-4 प्रोडक्ट बना के डेवलप कर दीजिए. इट विल वर्क लाइक एनीथिंग. और मैं ऐसे आपको हजारों एग्जांपल बता सकता हूँ, वेरी वेरी गुड एग्जांपल, कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट से बनाया, आप 40,000 करोड़ पे रामदेव जी पहुंच गए. उनका खुद का मॉडल है. वो कुछ नहीं है, आयुर्वेदा योगा को रिजोनेट करके, मैं उसको कल्ट बोलता हूँ, कैसी कल्ट ब्रांड बन गई जो 40,000 करोड़ का एम्पायर बना. वो प्रोडक्ट जबरदस्त नहीं है, लेकिन वो इंसान ने इसको कल्ट बनाया. तो ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, टेक्नोलॉजी से लेके कॉस्ट तक. दो चीज इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप में, यू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड यू फोकस ऑन कॉस्ट. मैं मार्केटिंग महाविया सोनी की बात कर रहा हूँ हमेशा. तो सोनी का जो फाउंडर है अकियो मोरिता, वो हमेशा ऐसा बोलता था कि माय प्रोडक्ट शुड बी बेस्ट. मैं लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, मैं लोगों को ऐसा बोलता हूं कि आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए. सो ये स्टार्टेड द फर्स्ट पोर्टेबल म्यूजिक, जिसको हम वॉकमैन बोलते हैं, उसको इन्वेंट किया. उसने लोगों को बोला कि म्यूजिक एक जगह बैठ के सुनने वाली चीज नहीं है, उसको आप कैरी कर सकते हैं. तो उसने वॉकमैन बनाया. अब सोचिए उस टाइम पे, हमारे टाइम पे वॉकमैन क्या जादू था. तो ये दो दो चीजें हैं. इधर आप कस्टमर को पूछिए कि आपको क्या चाहिए, वरना आप ऐसा बना दीजिए कि कस्टमर नीड रियलाइज करे कि साला ये तो जबरदस्त है, आई शुड कैरी द वॉकमैन. सो दैट्स अ myopia काइंड ऑफ थिंग. सो बोथ दिस वर्क्स. Couple of questions in the chat box. What is the recent difference of innovation in India compared to China? In 1950, 60, both were in similar financial position. Are they more intelligent than Indians, or Indians are lazy people? Government सुपर difference, क्वेश्चन, corruption. सुपर क्वेश्चन. पिछले 12 साल से मैं इसको आंसर कर रहा हूँ अलग अलग मोड पे, और मैं सही में बता रहा हूँ. अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो स्केल इज नंबर वन थिंग, बट बियॉन्ड दिस आप सोचिए. हमारे जब कैबिनेट मिनिस्टर, परसों मैं बात कर रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ गुजरात, ऋषिकेश पटेल जी, मुझको बोले कि यार ये चाइना का फर्नीचर इतना क्यों बिक रहा है, अहमदाबाद गांधीनगर में लोग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का फर्नीचर ला रहे हैं. मैंने बोला द स्केल.
हमारे पास उनकी एक एक स्केल चीज ऐसी है कि एक फर्नीचर का वार्डरोब बनाते हैं ना, तो उसमें 300 सप्लायर होते हैं, उसकी साइज और स्केल इतना इमेंस है जिसको हम कंपीट कर ही नहीं पाएंगे। तो नंबर वन, वो स्केल जबरदस्त है। नंबर टू, वो यूजर इंटरफेस में मास्टर है सर। यूजर इंटरफेस आप देखिए, मैं ओप्पो, वीवो और वन प्लस की स्टोरी सबको सुनाता था। ओप्पो, वीवो, वन प्लस गुजरात की गलियों में उन्होंने कंपटीशन करा दी ओप्पो और वीवो की। एक ग्रीन था, एक ब्लू था। गुजरात की गलियों में हर जगह ओप्पो और वीवो ना, वो दोनों बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है। लेकिन लोगों के, इंडियंस के माइंड में ऐसा है कि मैं, ओप्पो का कैमरा अच्छा है, वीवो का म्यूजिक अच्छा है, और वन प्लस तो प्रीमियम सेगमेंट में। सारे तीनों प्रोडक्ट बिक रही है एक कंपनी की। दे आर एक्सलेंट मार्केटर सर। आप, मैंने एक एपिसोड किया था 2019 में, कोविड में। उसके बाद तो बॉयकॉट चाइना रूल चला, वो गुजरात समाचार टीवी में मेरा एपिसोड था। सबसे पहले मैंने उनको, उस टाइम पे इंडिया में 30 यूनिकॉर्न थी, उसमें से 18 यूनिकॉर्न में चाइना का इन्वेस्टमेंट था। और जब मैंने स्टोरी क्रैक की वर्नाकुलर मीडिया में, ये स्टोरी पहुंच गई नेशनल मीडिया में, और बॉयकॉट चाइना मुहिम शुरू हुई। लेकिन वो बॉयकॉट चाइना की मुहिम में बॉयकॉट चाइना की टी शर्ट, वो चाइना से आई थी। 3 कंटेनर भर के टी शर्ट लाए थे चाइना से, टू शो द बॉयकॉट चाइना। तो ये उनकी, वो हमसे इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि जब मैं आयुर्वेदा कोटलर के साथ प्रमोट करने गया, तो मैंने कोटलर साहब को पूछा कि हमारे पास भी बेस्ट प्रोडक्ट है, हो नहीं रहा है। बाद में किसी ने मुझको पूछा कि, जिंगसेंग की बात कर रहा हूं, सलमान खान उस टाइम पे जिनसेंग को प्रमोट कर रहे थे। तो रिवाइटल, रिवाइटल और हेल्थ और ताकत के लिए, फ्रेश रहने के लिए रिवाइटल वाज अ ग्रेट ब्रांड। उसमें था क्या, बोले जिंगसेंग। अब लोग आज दुनिया में कौन सी जिंगसेंग पसंद कर रहे हैं, आप देखो, चाइनीज एंड कोरियन जिंगसेंग। अब सारा चाइनीज और कोरियन जिंगसेंग कैसे आई, हमारी इंडिया की अश्वगंधा है ये। और तो 5,000 साल पहले उसका रेफरेंस है, चरक में है, सुश्रुत ने बोला है, कर्क संहिता में बोला है। तो वो अश्वगंधा हमारी है। तो मैंने बोला कि हमारी अश्वगंधा, यानी इंग्लिश में मैं आपको जिंगसेंग बोलूं, जिंगसेंग चल क्यों नहीं रही। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला चाइना हैज पब्लिश 3000 पेपर्स ऑन ओनली जिंगसेंग। 3,000 पेपर पब्लिश किए थे। और इसकी रूट की स्टोरी बता रहा हूं सर। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। जब मैं 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, जिसका वर्ल्ड रैंकिंग 65th है, वहां पे 2 महीने के लिए गया, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, गुजरात को प्रमोट करने के लिए वहां पे कनाडा में। तब मैं सबको मिला, तब मुझको पता चला कि मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, वो दे वर हैविंग द चाइनीज प्रोफेसर, चाइनीज स्टूडेंट्स। क्योंकि कंटिन्यूअसली आप 90s से 2000 का एरा देखो, तो चाइना हैज सेंड देयर प्रोफेसर्स टू द यूएस, उन्हें सेंड देयर स्टूडेंट्स टू द यूएस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। और वहां से प्रोफेसर्स को बुला के चाइना में भी उन्होंने सेशंस कराए थे। तो आप सोचिए कि उनकी विजन क्या है, कि एजुकेशन के पीछे, रिसर्च के पीछे उन्होंने पैसा लगाया। उनको नहीं आता था, मैंड्रिन लैंग्वेज थी, हमारी तो इंग्लिश भी अच्छी थी, फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। वो सारी जगह चाइना पहुंच गया, और दुनिया का सप्लाई चेन बन के बैठा है, दुनिया का सप्लाई चेन। हम भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हमारी जो सारी दवाई आती है, मैंने कोविड टाइम पे भी बोला था, उसमें जो एपीआई होता है, बल्क डस्ट, जो हैवी वेसल्स चाहिए उसको प्रमोट करने के लिए, तो वो सब हम चाइना से ही एपीआई लेके आते हैं, और यहाँ पे हम दवाई बनाते हैं। तो स्टिल वी आर डिपेंडेंट, स्टील में डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर में डिपेंडेंट है, केमिकल में डिपेंडेंट है, यू नेम द कैटेगरी। इवन बीएलडीसी ब्रेसलेट, डायरेक्ट करंट मोटर में हम डिपेंडेंट है। दे आर नॉट मोर इंटेलिजेंट, बट दे हैव द विजन, दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, they send their student, they send their professor in western world, they learn, they also invited। तो आज आप यूएस कनाडा की यूनिवर्सिटी में जाओ साहब, अब देखो, आपको 1/3, अगर मेरी फिगर गलत तो बोलो, 1/3 प्रोफेसर आज चाइना के दिख। दैट्स द विजन ऑफ द कंट्री। Really thought-provoking mind. Yeah, yeah. Let me take up last question. Like SSIP, Student Startup Policy is a great initiative. Rather giving time to product development, we should focus on company formation, other paper legal aspect. So, what's your say on this? 100% legal is equally important. Why I'm telling you, nowadays there are a lot of legal startup. Kalpesh bhai is also, he has also developed a legal startup, because when your product grows and when it get the business, legality comes into the market. Earlier, if you're not successful, nobody will come in your way. But when you get the success, everybody will come in your way. So first, try to get all legalities properly done, right from team formation to partner to equity. ये हर एक इश्यू होता है कि शुरुआत में हम दोनों ने कंपनी बना दी, 50-50% इक्विटी रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, किसी का 50 है। सो वेन एवर यू आर गिविंग इक्विटी टू द पार्टनर्स, ऑल्सो हैव द प्रॉपर लीगलिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो समझाने की जरूरत सबसे पहली है कि भाई आपकी कंपनी है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप, कौन सा फॉर्मेशन है आपका।
तो वहां से लीगलिटी आती है, और इसलिए सारे स्टार्टअप में उसमें एक लीगल फ्रेमवर्क तो सबको समझाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लीगलिटी नहीं समझाएंगे, आज आपकी कंपनी में कुछ नहीं कर रही है, 1 लाख रुपया कमा रही है, लेकिन जब 4 साल के बाद इट बिकम पॉपुलर, उसकी फ्रेंचाइजी, उसके मीटू, उसके डुप्लीकेट, उसके ट्रेडमार्क्स के इश्यूज। मैं आपको एक सरप्राइजिंग एग्जांपल गुजरात का बता रहा हूँ। खेतला आपा करके यहाँ पे एक टी स्टॉल चला। अब खेतला आपा के टी स्टॉल वो इतना सक्सेसफुल हुआ, 3-4 स्टॉल उनके, कि पूरे गुजरात में गली कोने में खेतला। तो मैं उसके ओनर को मिला, मैंने बोला आपको तो यू बिकम बिलियनर। बोले कैसे? मैंने बोला आपके तो 4-5 हजार स्टॉल है। बोले भाविन में मेरे 20 ही स्टॉल है पूरे गुजरात में। साले बा, बाकी के 4,700 स्टॉल तो लोगों ने खुद ही नाम दे के रख दिए, मुझको पता ही नहीं कैसे रखे हैं। और ऐसे ही चाय वाला, चाय का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हमारे यहाँ पे दर्शन टी पोस्ट करके सक्सेसफुल आ गया, उसके बाद चाय जी, चाय वाला। चाय इतना पॉपुलर हो गया कि हर एक नुक्कड़ गली में चाय के पीछे वो जी लगाते हैं, कोई वाला लगाता है, कोई। वाई? बिकॉज नो बडी इज प्रोटेक्टेड, इट इज हैपनिंग एवरीवन। आप देखो कि फूड आइटम में कोई एक कैलाश सक्सेसफुल हो गया, साले कैलाश की भेंट पूरी है। अब ओरिजिनल कैलाश वाला कौन है वो तो किसी को पता नहीं, वो मर गया होगा शायद। जैसे एआई में, सॉरी, अपना ब्लॉक चेन क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो का ओरिजिनल फाउंडर कौन है? ही इज नो वन। लेकिन उसका आप ढूंढते रहिए कि हु ओरिजिनली फाउंडेड इट। तो ऐसा होता है, इसलिए लीगलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई गिव ड्यू स्ट्रेस टू लीगलिटी, इट शुड प्रॉपर्ली डन, क्योंकि बाद में ये सारे इश्यूज नहीं है। Same thing with like the I'm right in Vadodara, Rajwadi chai. रजवाड़ी सब So many, रजवाड़ी I don't एवरीवन know. टू राइट रजवाड़ी चाय, क्योंकि वो खत्म हो गया, खेतला आपा की स्टोरी खत्म हो गई, फिर चाय वाला चाय जी की स्टोरी आई, चाय वाला चाय जी खत्म हो गया, तब रजवाड़ी की आई। हर लोग गली नुक्कड़ कोनों में लिखता है रजवाड़ी चाय, आ जाओ। ओरिजिनल उसके 20 स्टॉल होंगे, लेकिन अनऑफिशियल 2,000 स्टॉल हो गए, बिकॉज अब उसको लड़ने जाना पड़ेगा ना, ट्रेडमार्क नहीं कराया है कोई, ठीक से उसका वो काम नहीं लिया है, तो कलर कॉम्बिनेशन पे भी जीत जाएंगे किसी और पे। और देखिए आपकी लीगलिटीज बहुत जबरदस्त होती है। मैं लीगल लैंग्वेज बताया कि आपको किसी को ऑरेंज देना है तो उसकी लैंग्वेज होती है रिस्पेक्टिव ऑफ पल्प, जूस, पान, इट्स ओरिजिनल पीन, आई एम ट्रांसफरिंग विथ होल माई व्हील जील एंड इन ऑल माई कॉन्शियस माइंड टू दिस। आप लीगल लैंग्वेज लिखते हो ना, वो बहुत सही होती है। पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तब को आप ये लीगल लैंग्वेज बजाती है। और एमओयूज जो करते हैं आप किसी के साथ, एमओयू के एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस कभी कभी करोड़ों में होता है, वो मैंने खुद देखा है, करोड़ों में होता है। आप आपको अभी मैं समझ, मैं यूज केस बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो पता चलेगा कि एक एक क्लॉज था हमारे यहाँ पे कि एक पीएसयूज को पैसा देना था, हॉस्पिटल को देना था, सीएसआर का फंड। उसमें लास्ट एक क्लॉज था कि आइदर दैट पर्टिकुलर पीएसयू और थर्ड पार्टी ऑडिट विल बी परफॉर्म, एंड देन द लास्ट 5% ऑफ द मनी विल बी डिसबर्स्ड, जिसको इम्पैक्ट एनालिसिस के बाद जो पैसा मिलना है वो होता है। अब क्या हुआ कि जब लास्ट डेट था डिसबर्स करने का, वरना पैसा पीएम केयर फंड में जाता था, तो उस दिन पे पता चला कि वो फंड नहीं दे रहे थे। तो पार्टी ने बोला कि एमओयू में तो ऐसा लिखा है, तो इधर आप ऐसा करिए कि वो हमको कराना था, पीएसयू को कराना था या थर्ड पार्टी को, अब दोनों ने नहीं कराया। तो किसी ने ऑब्जेक्शन ये डाला कि आपको करना था थर्ड पार्टी, आपने तो कोई नहीं कराया, अब ये पैसा आपको देना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टॉप दिस 5% विच वॉज 50 लाख। तो कभी कभी ये एमओयू, लीगल लैंग्वेज और ये सब बहुत जरूरी होता है, एंड इट विल बिकम एज अ सेवियर इफ यू आर गुड स्टार्टअप डू द लीगलिटीज प्रॉपर्ली। इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। Thank you very much, Dr. Bhavin, for great thought-provoking, I would say, not focusing on theoretical part, you have shared your personal experience also. And then participant, I hope, got some idea, like you participate on law, management, science, and different backgrounds are there, so they attended this program. And then I hope it set this, right tone for upcoming, sessions. So thank you very much, Bhavin, and then look forward to seeing you in future. थैंक यू। विश यू ऑल great success in this 10-day entrepreneurship program, faculty development program. Thank you all. Thank you. Thank you, participant, for joining. See you tomorrow at 7.